हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आईक्यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे जो आपको सभी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर अंडरगो रेगुलर मेंटेनेंस टू चेक। ऑप्शन 1 ट्रांसफार्मर इंसुलेशन, B transformer electrical current, C transformer conduction, D transformer rusting. So the right answer should be transformer insulation. Next है, which of the following is not fitted on the transformer? इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर से ताल्लुकात नहीं है या ट्रांसफार्मर रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन है कम्यूटेटर, बी ब्रेदर, C conservator, D Bucos relay. So the answer should be commutator. Next है, transformer breathe in when. ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर कब ब्रीथ करता है? ऑप्शन ए लोड ऑन इट इंक्रीजेज, बी लोड ऑन इट डिक्रीजेज, सी लोड रिमेन कांस्टेंट, डी नन ऑफ द अबव. So the answer should be B load on it decreases. Next, on which of the following factor does hysteresis loss depend? A flux density, B frequency, C thickness of the lamination, D time. So answer should be flux density and frequency. So answer should be B, A and 1 and 2. Next है, conservator tank is used. A to act as an oil storage, B for better cooling of transformer, C to take up the expansion of oil due to temperature is rise, D none of the above. So the answer should be C to take up the expenses of oil due to temperature is rise. Next, what would happen if a transformer is connected to a DC supply? अगर ट्रांसफार्मर में DC सप्लाई दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है नो इफेक्ट, ए नो इफेक्ट, बी ऑपरेशन विथ हाई एफिशिएंसी, सी डैमेज द ट्रांसफार्मर, डी ऑपरेट विथ लो फ्रीक्वेंसी. सो द ऑप्शन शुड बी डैमेज द ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट है, ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज़. ऑप्शन है ए हाई डी करंट लॉसेस, बी रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, सी लो हिस्टेरिसिस लॉसेस, डी ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर शुड बी बी रिड्यूस मैग्नेटिक लॉसेस. नेक्स्ट है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी? ए potential transformer, B auto transformer, C distribution transformer, D current transformer. So the answer should be auto transformer. Next, if the iron core of a transformer is replaced by an air core, then the hysteresis losses in the transformer will A increases, B decreases, C remain unchanged, D become 0. So the answer should be B 0, become 0. Next, the washing machine generally employs dash motor. A single phase motor, B resistance split phase motor, C shaded pole motor, D hysteresis. Answer है B. So the answer should be B hysteresis split phase motor. Next, the single phase series motor can operate on dash. A AC only, B DC only, C both AC and DC, D none of the above. So the answer should be both AC and DC. Next, the single phase shaded pole motor has dash. A squirrel cage motor, B wound motor, C high power factor, D high starting torque. Answer should be A squirrel cage motor.
Next, a capacitor-start capacitor-run motor has dash: A. Low power factor, B. High power factor, C. Low efficiency, D. High starting torque. So answer should be high power factor. Next, a 4-pole 50 Hz single phase induction motor has a slip of 5%. The speed of the motor would be A. 1500 rpm, 1425 rpm, C. 1200 rpm, D. None of the above. So we know that Ns equal to 120 f by P. So here 120 into f means here 50 Hz by P yani 4 pole, so P by 4. So here the rpm should be 1500 rpm, and here the slip also 5% here. So A is equal to Ns minus N by Ns, we know that, into 100. So here if you calculate this one, so the answer should be 1425 rpm. Next, power factor of an AC circuit is A. Sines of the phase angle, B. Cosine of the phase angle, D. Tangent of the phase angle, D. Q factor of the circuit. So the answer should be B. Cosine of the phase angle. Next, a terminal where more than two branches meet is known as A. Node, B. Terminals, C. Anode, D. None of the above. So the answer should be A. Node. Next, which of the following is a non-linear circuit parameter? A. Inductance, B. Condenser, C. Wound resistor, D. Transistor. So the answer should be D. Transistor. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।